नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं, परमाणु बम। हाँ, ये क्या है, कैसे बना और सबसे जरूरी, दुनिया पे इसका असर क्या रहा है। हमारे पास कई स्रोत हैं, कुछ वेबसाइट्स, ऐतिहासिक लेख, दस्तावेज। इनसे हम इसकी जरूरी बातें एकदम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। मकसद यही है कि ये जटिल विषय आसानी से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। परमाणु बम आखिर काम कैसे करता है? सुना है कुछ न्यूक्लियर फिजन जैसा होता है। हाँ बिल्कुल, परमाणु विखंडन या न्यूक्लियर फिशन। इसमें होता यह है कि यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे भारी तत्व का परमाणु का केंद्र मतलब नाभिक हाँ, वो टूटता है। और जब वो टूटता है तो उससे निकलती है जबरदस्त ऊर्जा। अच्छा। और साथ में निकलते हैं न्यूट्रॉन, जो फिर दूसरे परमाणुओं से टकराते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। बस ऐसे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। समझ गया। और इसके लिए ईंधन की जरूरत होती होगी, जैसे आपने कहा यूरेनियम या प्लूटोनियम। हाँ बिल्कुल, यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। लेकिन यहाँ एक पेच है। क्या? जो कुदरती यूरेनियम मिलता है ना, उसमें ज्यादातर यूरेनियम 238 होता है। अच्छा। जो आसानी से विखंडन नहीं करता। U-235 जो चाहिए वो बहुत कम होता है, करीब 0.7% ही। वो तो फिर यूरेनियम को समृद्ध करना पड़ता है, मतलब एनरिच करना। इसमें U-235 की मात्रा बढ़ाई जाती है। और ये आसान नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल, बहुत खर्चीली प्रक्रिया है। क्योंकि ये दोनों आइसोटोप्स U-235 और U-238 रासायनिक रूप से लगभग एक जैसे हैं। वजन में बहुत थोड़ा सा ही फर्क होता है। समझ गया, काफी जटिल है ये। अच्छा, अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलें। द्वितीय विश्व युद्ध और वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट, सुना बहुत बड़ा, बहुत गुप्त ऑपरेशन था ये। हाँ, बहुत ज्यादा। अमेरिका का लक्ष्य था कि नाजी जर्मनी से पहले वो परमाणु बम बना लें। कितने लोग शामिल थे इसमें? लगभग 1,30,000 लोग। और खर्चा उस जमाने के हिसाब से करीब $2 अरब। सोचिए। अविश्वसनीय। और इसका नतीजा, पहला टेस्ट कब हुआ? नतीजा आया 16 जुलाई 1945 को। पहला परमाणु परीक्षण, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहते हैं, न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में किया गया। और उसके कुछ ही हफ्तों बाद हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। हाँ, कहा जाता है कि मित्र राष्ट्रों ने जापान से बिना शर्त आत्मसमर्पण करने को कहा था। लेकिन जापान ने माना नहीं। पोट्सडैम घोषणा को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने पहले हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का यूरेनियम बॉम्ब गिराया। और फिर नागासाकी पर फैट मैन, वो प्लूटोनियम बॉम्ब था ना? हाँ बिल्कुल। और इनका असर, वो तो शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। भयानक था। कितना भयानक? मतलब फौरन क्या हुआ बम गिरने के बाद? फौरन तो एक जबरदस्त धमाका हुआ। इतनी तेज रोशनी कि कुछ देर के लिए दिखना बंद हो जाए। फिर आई भयानक गर्मी की लहर, जिसने मीलों दूर तक सबको जला दिया। और फिर जानलेवा रेडिएशन। हे भगवान, आंकड़े देखिए। हिरोशिमा में धमाके के वक्त मौजूद 90% से ज्यादा डॉक्टर और नर्स या तो मारे गए या बुरी तरह घायल हो गए। मतलब मदद करने वाला ही कोई नहीं बचा। हाँ, और नागासाकी में वहां की बड़ी मित्सुबिशी हथियार फैक्ट्री थी। उसके 7,500 कर्मचारियों में से 6,200 मारे गए। बाप रे। एक अनुमान है कि अकेले नागासाकी में उसी साल के अंत तक मरने वालों की संख्या 60,000 से 80,000 के बीच पहुंच गई थी। और ये तो बस शुरुआती असर था, बाद में लंबे समय तक भी तो इसका प्रभाव रहा होगा। क्या उस समय वैज्ञानिकों को अंदाजा था कि रेडिएशन का इतना लंबा असर होगा? पूरी तरह शायद नहीं। देखिए, जो लोग उस भयानक विस्फोट और गर्मी से बच गए, उनमें से कई तीव्र विकिरण बीमारी, जिसे एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम या ARS कहते हैं, उसका शिकार हुए। और बाद के सालों में? बाद में कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया, खासकर ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, थायराइड कैंसर, फेफड़ों का, स्तन का, मूत्राशय का कैंसर, ये सब बहुत देखा गया। कैंसर के अलावा और भी कुछ? हाँ, दिल की बीमारियां, मोतियाबिंद जैसी आंखों की दिक्कतें, ये सब भी उन बचे हुए लोगों में आम हो गई। लेकिन एक बात, क्या इसका असर अगली पीढ़ी पर भी पड़ा, मतलब जेनेटिक? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर काफी स्टडी हुई है। लेकिन अध्ययनों में उन बचे हुए लोगों के बच्चों में जन्मजात विकृतियों या बीमारियों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं पाई गई है, जो सीधे तौर पर माता पिता के रेडिएशन एक्सपोजर से जुड़ी हो। अच्छा, ये जानना जरूरी था। तो इन हमलों ने वाकई दुनिया बदल दी। क्या यहीं से परमाणु युग और फिर वो शीत युद्ध की शुरुआत हुई? हाँ बिल्कुल,
हिरोशिमा नागासाकी के बाद दुनिया एक नए युग में दाखिल हो गई, परमाणु युग। और फिर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की एक खतरनाक होड़ शुरू हो गई, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं। और वो मैड वाला सिद्धांत, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। हाँ, आपसी सुनिश्चित विनाश। मतलब ये कि दोनों महाशक्तियों के पास इतने परमाणु हथियार हो गए थे कि अगर एक ने हमला किया तो दूसरा जवाबी कार्रवाई में पहले वाले को पूरी तरह तबाह कर देगा और शायद खुद भी तबाह हो जाएगा। एक तरह का डरावना संतुलन। हाँ, इसी डर ने शायद एक और विश्व युद्ध को रोका, लेकिन दुनिया दशकों तक परमाणु युद्ध के साए में जीती रही। जाहिर है इस खतरे को कम करने की कोशिशें भी हुई होंगी। निरस्त्रीकरण, हथियारों पर रोक लगाने की संधियां। हाँ, बिल्कुल हुई। डर था तो रास्ते निकालने की कोशिश भी हुई। 1963 में एक अहम संधि हुई, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी LTBT। इसमें क्या था? इसने हवा में, पानी के नीचे और बाहरी अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षणों पर रोक लगा दी। जमीन के नीचे टेस्ट्स अभी भी हो सकते थे, लेकिन ये एक बड़ी बात थी। और NPT, वो भी बहुत सुना है, परमाणु अप्रसार संधि, यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये 1970 में लागू हुई। इसके 3 मुख्य लक्ष्य थे: परमाणु हथियारों का फैलाव रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और अंततः परमाणु निरस्त्रीकरण हासिल करना। ये संधियां कितनी सफल रही ये तो बहस का मुद्दा है, लेकिन कोशिशें तो हुई। हाल फिलहाल में भी कुछ हुआ है इस दिशा में? हाँ, एक और महत्वपूर्ण कदम है 2017 का। 122 देशों ने मिलकर परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि, यानी TPNW, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को अपनाया। ये क्या कहती है इस संधि? ये संधि परमाणु हथियारों को विकसित करने, परीक्षण करने, रखने, इस्तेमाल करने या इस्तेमाल की धमकी देने को पूरी तरह से गैर कानूनी मानती है। हालांकि जो बड़े परमाणु शक्ति वाले देश हैं, वो इसका हिस्सा नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र UN का क्या रोल है? संयुक्त राष्ट्र लगातार परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए प्रयास कर रहा है। उनके महासचिव का एक निरस्त्रीकरण एजेंडा भी है, जिसमें पारदर्शिता बढ़ाने, हथियारों को कम करने और सुरक्षा नीतियों में परमाणु हथियारों की भूमिका घटाने पर जोर दिया गया है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि परमाणु बम सिर्फ एक हथियार नहीं है। ये एक ऐसी विनाशकारी शक्ति है जिसका असर सिर्फ फौरन नहीं होता, बल्कि दशकों तक, पीढ़ियों तक महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल। हिरोशिमा और नागासाकी की जो दर्दनाक यादें हैं, वो हमें बार बार शांति की, निरस्त्रीकरण की अहमियत याद दिलाती हैं। परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया बनाने का लक्ष्य बहुत जरूरी है, लेकिन ये राह आसान नहीं है। हाँ, ये चुनौती बहुत बड़ी है, खासकर आज के इस तनाव भरे अंतर्राष्ट्रीय माहौल में। तो आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में रह जाता है: क्या इंसानियत कभी परमाणु हथियारों के इस भयानक खतरे से पूरी तरह मुक्त हो पाएगी? और अगर हाँ, तो उसके लिए और क्या कदम उठाने जरूरी हैं? सोचने वाली बात है। सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ परमाणु ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। हाँ जी, सत श्री अकाल। साडे कोल काफी सारी जानकारी है, अलग-अलग ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੇਖ ਨੇ, ਖੋਜ ਪੱਤਰ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨੋਟਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ, ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ, ਨਾਗਾਸਾਕੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਰ, ਧਮਾਕਾ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, EMP ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਹੈ ਕੀ? ਮਤਲਬ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਐਟਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਫਿਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਰੀ ਐਟਮ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ 235 ਜਾਂ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ 239। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਲਕੇ ਐਟਮਾਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਵਰਗੇ। ਇਹ
ਫਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਮਤਲਬ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਈ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਲੱਭਿਆ, ਕਿਊਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨਹਟਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨਹਟਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ। ਕਿਉਂ? ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਵਾਲਾ ਖਤ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ? ਹਾਂ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਤੇ ਸਿਜ਼ਿਲਾਰਡ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਦੋ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਨਰਿਚਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਓਕ ਰਿਜ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਹੈਨਫੋਰਡ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਬ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਬਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਲਿਟਲ ਬॉय, ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸੀ ਫੈਟ ਮੈਨ, ਇਹ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਫਿਰ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ? ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਬਸ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਪੋਟਸਡੈਮ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ 6 ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਲਿਟਲ ਬॉय ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਤੇ ਫੈਟ ਮੈਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ? ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ 90,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,66,000 ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਏ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ। ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ 'ਚ 60 ਤੋਂ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਭਿਆਨਕ ਜਲਣ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਭੁੱਖਮਰੀ। ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਧੂੜ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ? ਹਸਪਤਾਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਰੰਤ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋਏ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਤੇ ਇੱਕ EMP ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪਲਸ। ਇਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੰਤਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ, ਗਾਮਾ, ਐਕਸ-ਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, DNA ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਜ਼ੀਅਮ 137, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਹੋਏ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ। ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੋਣਾ। ਯਕੀਨਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਹੰਡਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਚਿੰਤਾ, ਪੋਸਟ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ PTSD ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂ, H ਬੰਬ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਟਰੈਂਸ ਯਾਨੀ ਰੋਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਈ। MAD, ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਅਸ਼ੋਰਡ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਆਪਸੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਯਕੀਨ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਟਲ ਗਈ। ਪਰ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਊਬਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਸ ਬਚੀ ਗਈ। ਹਾਂ, 1962 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ UK, ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ,
ਜਿਵੇਂ 1963 ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਪਰੀਖਣ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਧੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਪਰੀਖਣ ਰੋਕੇ। ਤੇ ਐਨਪੀਟੀ? ਹਾਂ, 1968 ਦੀ ਗੈਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੰਧੀ ਐਨਪੀਟੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਟੀਪੀਐਨਡਬਲਿਊ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ, 2017 ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਤੇ ਸੰਧੀ ਟੀਪੀਐਨਡਬਲਿਊ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਵੀ 2024 ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਵਰਤਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਲਈ ਅਹਿੰਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਡਿਟਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ICAN ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਟੂ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਡੈਨਸ਼ੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟੀਏ ਤਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਤਾਕਤਵਰ ਤਬਾਹਕੁਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਡਰ, ਸਿਆਸਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਸਭ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋਚਣ ਲਈ। ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ, ਨਾਗਾਸਾਕੀ, ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਰੋਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। आज हम एक बहुत अहम और संजीदा मौजू पर बात कर रहे हैं, जौहरी हथियार। उनकी तारीख क्या है, ये कैसे काम करते हैं और इनके असरात कितने गहरे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास जो मालूमात हैं वो तारीखी दस्तावेजात, साइंसी रिपोर्ट्स, इन सब पर मबनी हैं। और हमारा मकसद ये है कि हिंदुस्तान में सभी सुनने वालों को एटम बम के बारे में एक वाज़ेह तस्वीर मिल सके, उसकी साइंस, तारीख, तबाही और इससे जुड़े अमन के सवालात। तो आइए शुरू करते हैं। देखें, जौहरी हथियारों की बुनियाद ना वो दो साइंसी अमल हैं, फिशन और फ्यूजन। अच्छा जी, फिशन में क्या होता है कि यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे भारी एटम का मरकज़ा टूटता है, इससे बहुत ज्यादा तवानाई निकलती है। ये जो रवायती एटम बम्स है ना, वो इसी पर बनते हैं। ओके, और फ्यूजन वो क्या है? फ्यूजन इससे भी ज्यादा ताकतवर है। इसमें हाइड्रोजन जैसे हल्के हाटमी मरकजे आपस में मिलते हैं। हाइड्रोजन बम इसी उसूल पर काम करता है। समझ गई। तो ये सब शुरू कब हुआ? देखें, इसका बाकायदा आगाज तो दूसरी जंग अजीम में हुआ। अमेरिका का एक खुफिया मंसूबा था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। हाँ, सुना है उसके बारे में। जी, पहला कामयाब तजर्बा, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहते हैं, वो जुलाई 1945 में हुआ। और फिर जाहिर है अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी हुई। बहुत ही खौफनाक वाकयात थे। यकीनन, अमेरिका पहली जौहरी ताकत बना। फिर 4 साल बाद 1949 में सोवियत यूनियन ने भी यह सलाहियत हासिल कर ली। और यहीं से मतलब वो सर्द जंग की खतरनाक हथियारों की दौड़ शुरू हो गई, एक दूसरे पर बर्तरी ले जाने की कोशिश। बिल्कुल वहीं से। आज तो कई ममालिक हैं जिनके पास ये हथियार हैं। अमेरिका, रूस, बर्तानिया, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, शोमाली कोरिया भी। जी हाँ, और इसराइल के बारे में भी यही माना जाता है।
और इनको हदफ तक पहुंचाने के लिए भी मुख्तलिफ तरीके हैं। मिसाइल हैं जैसे ICBMs, SLBMs, यानी वो लंबे फासले वाले मिसाइल और आबदोज से चलने वाले। जी, और बमबार तैयारे भी हैं और छोटे टैक्टिकल हथियार भी। करना भी मुश्किल है। हिरोशिमा, नागासाकी, जी, धमाका, शिद्दत गर्मी, फिर वो ताबकारी, 1 लाख से ज्यादा लोग तो फौरन ही हलाक हो गए। जी हाँ, फौरी तौर पर। इमारतें, सड़कें, पुल, सब कुछ तबाह। और हिरोशिमा में तो सुना है कि 90% डॉक्टर और नर्सें भी या तो मर गए या जख्मी हो गए। मतलब मदद करने वाला भी कोई नहीं बचा। बिल्कुल, तिब्बी निजाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया था। और फिर वो ताबकार जर्रात, फॉलआउट, वो हवा के साथ फैलकर दूर तक खतरा बन जाते हैं। हाँ, हालांकि सुना है कि तापकारी की सतह वक्त के साथ कम होती जाती है। पहले घंटे में काफी कम और 2 दिन में शायद 99% तक। जी, ये दुरुस्त है। फौरी तापकारी खतरनाक होती है, लेकिन फॉलआउट की सतह तेजी से गिरती है। मगर गुंजान आबाद शहरों में, जैसे मुंबई, बिल्कुल, अगर वहां ऐसा कुछ हो तो तबाही के बाद लोगों को निकालना वो तकरीबन नामुमकिन होगा। अफरा तफरी का आलम होगा। ये तो फौरी असरात हुए, लेकिन लंबे अरसे तक क्या होता है? हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। हिरोशिमा और नागासाकी के जो बच जाने वाले थे, जिन्हें हिबाकोशा कहते हैं, उन पर दहाइयों तक तहकीक हुई है। LSS स्टडी। अच्छा, इससे क्या पता चला? इससे मालूम हुआ कि उन लोगों में कैंसर का खतरा बढ़ गया, आम आबादी से औसतन कोई 10% ज्यादा। और ये खतरा बमबारी के 50 साल बाद भी था। उसके अलावा दिल की बीमारियां, मोतिया, हाई ब्लड प्रेशर, इनका ताल्लुक भी तापकारी की मिकदार से देखा गया। लेकिन क्या ये असरात अगली नस्लों में भी गए, मतलब जेनेटिक तौर पर? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। तहकीक से ये बात सामने आई कि बमबारी के बाद जो बच्चे पैदा हुए, उनमें मौरूसी नकाइस या जेनेटिक बीमारियों में कोई वाज़े इजाफा नहीं देखा गया। ये तो कुछ राहत की बात है। जी, लेकिन जिस्मानी असरात के अलावा नफ्सियाती जख्म बहुत गहरे थे। खौफ, सदमा और तापकारी के अनजाने असरात का डर ये जिंदगी भर साथ रहा और मुआशरे में उनके साथ इम्तियाजी सुलूक भी हुआ। और माशी तौर पर तो तबाही हुई ही होगी। जाहिर है, शहरों की तामीर नौ पर बेतहाशा वसाइल लगे। इतनी तबाही के बावजूद आज भी कई मुमालिक इन हथियारों को अपनी सलामती के लिए जरूरी समझते हैं। ये जो डिटेरेंस का नजरिया है। जी, बाहमी यकीनी तबाही या मैड। हाँ, कि अगर जंग हुई तो दोनों तरफ मुकम्मल तबाही होगी, तो कोई पहल नहीं करेगा। यही बुनियादी ख्याल है। लेकिन इसमें एक मसला भी तो है, वो इस्तेहकाम अदम इस्तेहकाम का तजाद। कि बड़ी जंग तो शायद ना हो, लेकिन छोटी मोटी इलाकाई लड़ाइयों का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल, ये एक तस्लीम शुदा पेचीदगी है कि शायद एटमी जंग ना हो, मगर छोटे तनाज़ात का रिस्क बढ़ सकता है। दूसरी तरफ इन हथियारों को खत्म करने की कोशिशें भी हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का वो मुआहदा TPNW, जी, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, 2017 में मंजूर हुआ। 120 से ज्यादा मुमालिक ने हिमायत की। और हिंदुस्तान का क्या मौक़िफ़ है इस पर? हिंदुस्तान खुद को एक जिम्मेदार जोहरी ताकत समझता है। हमारी पॉलिसी पहले इस्तेमाल ना करने, यानी नो फर्स्ट यूज की है। अच्छा। और हम एक काबिले एतबार कम अज कम दिफाई सलाहियत, यानी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पर यकीन रखते हैं। साथ ही आलमी सतह पर मुकम्मल जोहरी तखफीफे असलहा के हामी हैं। तो मतलब एक तवाजुन कायम रखने की कोशिश है। जी, एक तरह से। तो खुलासा यह है कि ये हथियार बेइंतहा तबाहकुन है। इनके फौरी और तवील मुद्दती असरात दोनों ही हौलनाक हैं। और दुनिया डिटरेंस और तखफीफे असलहा के दरमियान एक मुश्किल रास्ते पर चल रही है। सही। आज की गुफ्तगू के आखिर में एक सवाल शायद हम सबके जहन में रह जाता है। इन हथियारों के गहरे असरात और जो आलमी कशीदगी हम देखते हैं, उसे मद्देनजर रखते हुए आने वाली नस्लों के लिए इस टेक्नोलॉजी की जिम्मेदाराना निगरानी कैसी होनी चाहिए, ताकि हम एक ज्यादा महफूज मुस्तकबिल की तरफ जा सकें। Okay, think about this for a second. Over 2,000 times. Since 1945, that's how many nuclear weapons have been detonated.
intentionally. And each one of those explosions had these ripple effects, impacting communities all over the world. Welcome to the Deep Dive. Hello. Today, we're really zooming in on the atom bomb. We want to understand how it works, the history behind it, its devastating effects, and crucially, why knowing all this matters for us, especially for you listening in India, as we think about peace, about the future. Yeah, and we've drawn on quite a few reliable sources for this, trying to give you a clear, accessible picture of what's, let's face it, a really complex subject. Right. Our aim isn't to get lost in, tiny technical details. It's more about grasping the core ideas and just how profound the impact has been. Exactly. We want to cut through the noise, get to the heart of it. So our mission today, to really distill the essential things you need to know about atom bombs. Hopefully that fosters a deeper understanding, helps shape how we all look at this vital goal of global peace. Sounds good. Okay, so let's dive right in. Let's unpack the basic science behind these incredibly powerful weapons. Right. So the sheer energy of an atom bomb, it comes from a process called nuclear fission. And this involves very specific kinds of atoms, what scientists call fissile isotopes. The main ones are uranium-235 and plutonium-239. Fissile isotopes. Okay. Yeah. And what makes them special is that their nuclei, their centers, can be, relatively easily split apart. Okay, so walk me through that. What happens when one of these atoms actually splits? Well, imagine a tiny particle, a neutron, hitting the nucleus of, say, a uranium-235 atom. That impact makes the nucleus really unstable, and boom, it splits, usually into two smaller nuclei. Right. And in that instant, a huge amount of energy is released. We're talking something like 200 million electron volts or MeV for just one atom splitting. But what's also absolutely critical is that this split also releases more neutrons, usually 2 or 3. Ah, okay. And that's where the chain reaction idea comes from, isn't it? Precisely. That's the key. For this reaction to keep going, to build at least one of those new neutrons has to hit another uranium nucleus nearby and make that one split, releasing even more energy and, crucially, more neutrons. Which then hit other nuclei. Exactly. If this happens over and over again incredibly fast, you get a self-sustaining chain reaction. But, and this is important, it only works if you have enough of this fissile stuff packed together. Which brings us to that term you hear a lot, critical mass. That's it, exactly. Critical mass is simply the smallest amount of fissile material you need in one place to keep that chain reaction going. If you have less than that, what we call subcritical, too many of those neutrons just fly off into space without hitting anything. And the reaction just fizzle out. Right, it dies down. You need that critical mass or even more supercritical mass for the explosion. So, okay, that's the principle. How do they actually turn that into, the bombs used on Hiroshima and Nagasaki? How do you achieve that in a weapon? Well, the early bombs used different methods. Little Boy, the Hiroshima bomb, used what's called a gun-type design. It's conceptually simpler, I guess. Simpler. How so? They basically took two separate pieces of highly enriched uranium-235. Each piece by itself was subcritical, so safe on its own. Then, they used conventional explosives, like gunpowder, to fire one piece down a barrel into the other piece, like a bullet hitting a target. Wow. When those two pieces slammed together, they instantly formed a supercritical mass, more than enough uranium packed together. That allowed the chain reaction to take off almost instantaneously, leading to that massive explosion. Wow. Okay, and the Nagasaki bomb, Fat Man, you said that was different. Yes, Fat Man used a more sophisticated design called implosion, and this is actually the basis for most nuclear weapons today. Implosion? How does that work? Okay, so instead of uranium, Fat Man used a sphere of plutonium-239. Now, this sphere was also subcritical to start with, but it was surrounded by these very precisely shaped conventional explosives, like lenses focusing energy. When those chemical explosives detonate, all the force is directed inwards, crushing the plutonium sphere incredibly hard and fast. This compression dramatically increases the plutonium's density. Squeezing it together. Exactly. And by squeezing it, making it denser, even though the amount of plutonium hasn't changed, it reaches critical mass. Then, at that precise moment of maximum squeeze, they inject a burst of neutrons from a source inside to reliably kickstart the chain reaction. And that's more efficient. Much more efficient, yes. The implosion method allows for a more powerful explosion using less fissile material compared to the gun-type design. It's technically more challenging to build, but more effective.
It's almost mind-boggling, the ingenuity involved in creating something so destructive. Yeah. You also mentioned other types of nuclear weapons earlier. Could you maybe touch on those briefly? Sure. The next step up in power are thermonuclear bombs, which most people know as hydrogen bombs or H-bombs. These are way more powerful. They actually use a fission bomb, like the ones we've been talking about, as a trigger. That initial fission explosion creates incredibly high temperatures and pressures. Like a match to light an even bigger fire. Sort of, yeah. That intense heat and pressure from the primary fission bomb is used to force isotopes of hydrogen, usually deuterium and tritium, or sometimes lithium deuteride, to fuse together. That's nuclear fusion, the same process that powers the sun. Okay. This fusion reaction releases even more energy and, importantly, lots of very high-speed neutrons. And this happens inside a special container designed to reflect radiation and contain the pressure. Briefly, the Teller-Ulam design is the key concept behind these really powerful multi-megaton weapons. So fission triggers fusion. Right. But there's often another layer, those super fast neutrons from the fusion stage. They're so energetic they can cause fission in materials that aren't normally easy to split, like depleted uranium, which is mostly uranium-238. So you get even more bang for your buck, so to speak. Exactly. In many large thermonuclear weapons, this final fission stage, splitting the depleted uranium casing, can actually contribute about half of the total explosive yield. It's a sort of fusion-fission process. Incredible. And you hinted at even more, well, theoretical ideas. Yeah, these are much more speculative, really on the fringes or in the future. Scientists have looked at things like nuclear isomers, atoms, in a sort of long-lived, excited energy state. The idea was maybe you could trigger them to release that stored energy as powerful gamma rays, perhaps even as trigger. And then there's antimatter, matter's opposite. When matter and antimatter meet, they annihilate each other, releasing pure energy. Theoretically, it could be used as an explosive or maybe a trigger, but the challenges of producing and storing any significant amount of antimatter are just, well, enormous right now. These are far from practical realities. Okay, that's a good overview of the science. Let's shift gears now to the history, because the story of the atom bomb is completely tied up with World War II and this incredibly secret effort, the Manhattan Project. Absolutely. The Manhattan Project was born out of fear, really. Fear that Nazi Germany was ahead in the race to build a nuclear weapon. This fear was amplified by brilliant scientists, many of whom had actually fled the Nazis in Europe. Right. People like Einstein. Well, Einstein played a key role early on. The famous Einstein-Sillars letter to President Roosevelt in 1939, that was a huge catalyst. It warned Roosevelt about the possibility of atomic bombs and urged the U.S. government to start its own research program. And the British were involved too, weren't they? Very much so, especially in the early stages. A British committee, the MAUT, produced a really critical report in late 1941. It basically concluded that a bomb using uranium-235 was feasible, and maybe with less material than previously thought. Making it seem more achievable. Exactly. That MAUD report really kicked things into high gear in the U.S. It led to the consolidation of various research efforts under the U.S. Army Corps of Engineers, which they codenamed the Manhattan Engineer District, hence the Manhattan Project. And the man put in charge of the whole thing was Major General Leslie R. Groves, Jr. It sounds like an absolutely enormous undertaking. What kind of scale are we talking about? Resources, people. Oh, unprecedented. No. Truly massive. At its peak, the project employed something like 130,000 people, and the cost was staggering nearly $2 billion back then. That's, tens and tens of billions in today's money. Wow. Where did all that money go? The vast majority, over 80%, went into building and running these absolutely enormous industrial facilities needed to produce the fissile materials. You had the huge plants at Oak Ridge, Tennessee, the Clinton Engineer Works focused on enriching uranium, and then the Hanford Engineer Works out in Washington State built pretty much from scratch to produce plutonium in reactors. And these were supported by other sites? Yeah, dozens of them. Research labs, industrial partners scattered across the U.S., but also with significant contributions from the U.K. and Canada. It was a sprawling network. Now, you mentioned earlier they had different designs. Initially, they thought one design might work for both uranium and plutonium. That's right. The early thinking, the simpler approach, was the gun-type method, and they assumed it would work for both U-235 and plutonium. But then came a critical discovery about plutonium specifically, an isotope called plutonium-240 that's inevitably produced along with the desired Pu-239. Right. This Pu-240 has a high rate of spontaneous fission. It spits out neutrons on its own.
In a gun-type bomb, this meant the plutonium would likely start the chain reaction too early before the pieces were fully slammed together. It would fizzle, a pre-detonation yielding much less power. So the gun design was out for plutonium. Exactly. That discovery forced a major shift and led to this intense focus on developing the alternative, the implosion method, which was much more complex mathematically and technically. And the actual weapon design happened somewhere else? Yes, the core scientific work on designing and building the bombs themselves happened at a secret laboratory built in Los Alamos, New Mexico, under the direction of physicist J. Robert Oppenheimer. That's where they developed Little Boy, the uranium gun-type bomb, and Fat Man, the plutonium implosion bomb. And before they were used in war, they had to test it, right? The Trinity test. Yes, absolutely crucial. The Trinity test. July 16th, 1945, out in the New Mexico desert, they detonated a plutonium implosion device, very similar to Fat Man. It was the world's first nuclear explosion. And how did it go? It was successful. Yeah. Actually, the yield, the power of the explosion was significantly higher than many of the scientists had predicted. It proved the implosion concept worked, and worked terrifyingly well. Which brings us to maybe the most difficult part of this story. The decision to actually use these weapons against Japan. Our sources say the Allies were preparing for a massive, potentially horrific invasion of the Japanese mainland. That's definitely part of the context, yes. By the summer of '45, Germany had surrendered. The war in Europe was over. All Allied focus was on the Pacific, and Japan had already been subjected to, well, devastating conventional bombing raids. Many cities were in ruins. But they hadn't surrendered. No. And the U.S. military planners were drawing up plans for Operation Downfall, the invasion of Japan. They were predicting truly staggering casualties, potentially millions on both sides, if a land invasion was necessary. So to try and avoid that, the Allies issued the Potsdam Declaration. Correct. On July 26, 1945, the leaders of the U.S., Britain, and China issued this declaration calling for the unconditional surrender of all Japanese armed forces. It was an ultimatum. Surrender unconditionally or face, quote, prompt and utter destruction. But it didn't specifically mention the atomic bomb. No, it didn't. The existence of the bomb was still top secret. And how did Japan respond? The Japanese government, led by Prime Minister Suzuki at the time, essentially chose to ignore it, at least publicly. The term they used was mokusatsu, which can be interpreted in a few ways, but it was taken by the Allies to mean rejection. Internally, there was debate, and Japan was still hoping the Soviet Union might mediate a peace deal that wasn't unconditional surrender, particularly regarding the emperor's status. Right. The Allies wanted unconditional surrender, full stop. Yes, that was the demand. Now, a question that often comes up is, why didn't they just demonstrate the bomb? Drop one on an uninhabited island or something to show Japan the power they faced without killing civilians. That was considered, but there were several strong arguments against it at the time. First, what if it was a dud? They only had 2 or 3 bombs ready. If they announced a demonstration and the bomb failed to explode, the psychological impact would be gone, maybe even counterproductive. It could embolden Japan. Okay, that makes sense. Second, could the Japanese interfere? Maybe try to shoot down the plane carrying the bomb, or move Allied prisoners of war to the demonstration site. Third, and perhaps most significantly, would a demonstration on an empty target really be convincing enough? Would it shock Japan's military leadership into surrendering, especially given their demonstrated willingness to endure immense conventional bombing? The assessment was that only the shock of devastating an actual city would be decisive. So Hiroshima was chosen as the first target. Why Hiroshima? What was its significance? Hiroshima was a very important city for the Japanese military. It was a major supply and logistics base, a communications hub, a key port, and an assembly point for troops. It also had significant industries supporting the war effort. And it hadn't been heavily bombed before. Relatively speaking, no. Unlike many other major Japanese cities, Hiroshima had been largely spared from the intense firebombing campaigns. This was partly because it wasn't a primary center for aircraft production, which had been a top priority for earlier bombing raids. In fact, it was specifically taken off the conventional bombing list shortly before, possibly to preserve it as a potential atomic target. Okay. And the mission itself, on August 6th. The B-29 bomber, named the Enola Gay, piloted by Colonel Paul Tibbets, took off from Tinian Island. It had the Little Boy uranium bomb. 2 other B-29s flew with it, one for scientific measurements, one for photography. Hiroshima was the primary target. Kokura and Nagasaki were the backups if Hiroshima was obscured by clouds. And then, just 3 days later, after the unimaginable horror in Hiroshima, they bombed Nagasaki. Why Nagasaki?
Well, the intended target for the second bomb on August 9th was actually the city of Kokura. It also had major military industries. But when the B-29 carrying Fat Man, the plutonium bomb, arrived over Kokura, the city was hidden by thick clouds and smoke. Bad weather. Yeah, or possibly smoke from nearby conventional bombing raids the day before. After circling several times, trying to get a visual confirmation of the target, they had to abandon Kokura and fly to the secondary target, Nagasaki. Which was also an important industrial city. Yes, Nagasaki was a major port with large shipbuilding facilities and other war industries. So, Fat Man was dropped there, causing another catastrophe. Our sources mentioned that President Truman, who made the final decision, seemed, well, deeply affected by the human cost. Yes, reports suggest Truman was profoundly troubled after seeing the initial reports and casualty estimates from Hiroshima. He reportedly expressed grave concerns about wiping out another city, potentially killing another 100,000 people, especially worried about all the children. So did he try to stop further bombings? There was discussion. The standing order had been to bomb target cities as made ready. Truman apparently ordered that no further bombs be dropped without his express authorization. There was also talk in the military about saving the next bombs they were assembling more for tactical use during the planned invasion, Operation Downfall. General Groves, head of the Manhattan Project, actually halted the shipment of the next plutonium core on his own authority around August 13th. Wow. So we were potentially days away from a third bombing. Yeah. How did Japan react initially? Did they even understand what had hit them? Understanding was slow and confused, especially after Hiroshima. Communications were completely knocked out. People in Tokyo noticed the Hiroshima radio station went silent, telegraph lines went dead. Then gradually these fragmented, almost unbelievable reports started trickling in about a single explosion that had destroyed the city. A similar situation after Nagasaki? Yes, similar chaos and communication breakdown, making it hard for the central government to grasp the full reality immediately. Now, there's also a significant debate among historians about what really caused Japan to surrender. Was it the bombs, or was it something else? That's a major point of discussion. Some historians argue very strongly that the Soviet Union declaring war on Japan and invading Manchuria on August 9th, the same day as the Nagasaki bombing, was actually the decisive factor. Why would that be more decisive? Because it destroyed Japan's last hope. They had been trying desperately to get the Soviets, who were still neutral in the Pacific War at that point, to mediate a peace settlement on terms better than unconditional surrender. When the Soviets attacked, that hope evaporated instantly. It showed Japan they were truly alone and facing overwhelming force on all sides. So the argument goes, it was the Soviet entry, and not necessarily the second bomb, that tipped the balance for the emperor and the leadership. But ultimately they did surrender. What were the final terms? They initially offered surrender, but with one condition, that the emperor's position, his authority, be preserved. The Allies initially rejected this, insisting on the original Potsdam terms unconditional surrender. However, after some internal debate and careful wording in the final Allied response, Japan accepted, with the understanding, though not explicitly guaranteed, that the emperor would remain, albeit subject to the authority of the Allied commander. Okay. The immediate destruction was one thing, but the long-term effects. There's just horrifying and ongoing for the survivors, the hibakusha. Absolutely devastating. I mean, in Hiroshima, something like 90% of doctors and nurses were killed or injured instantly. Hospitals obliterated. Dealing with the injured was almost impossible. Fires. Huge firestorms engulfed the cities. And then there was this phenomenon called black rain, this sticky, radioactive mixture of ash, fallout, and condensation that fell afterwards, causing radiation burns on exposed skin. Beyond that, you had the immediate deaths and injuries from the blast rate itself, the incredible heat of the fireball, buildings collapsing, flying debris. And the radiation, the invisible killer. What were its immediate impacts? Radiation sickness started appearing quickly. Even at exposures around 125 rads, rad is a unit of absorbed dose, people started dying. At 300, 400 rads, it was about a 50% mortality rate without treatment. Extremely high doses, over 1,000 rads, caused death within hours or days from damage to the brain and nervous system. And for those who survived, the initial blast but got high doses. Radiation severely damages rapidly dividing cells. That includes the cells lining your gut and, crucially, the stem cells in your bone marrow that make blood cells. So many died weeks or months later from infections because their immune systems collapsed, or from internal bleeding because they couldn't produce platelets anymore. You hear about acute radiation syndrome, ARS. What are the signs people should know, maybe even relevant today in other radiation accident scenarios?
Well, the early signs after significant exposure are often things like nausea, vomiting, diarrhea, fatigue. These might appear within minutes or hours. Later, maybe days or weeks after the initial symptoms seem to subside, you might see unexplained bleeding, like nosebleeds or bruising, hair loss, that's called epilation, and blood tests which show drastically low white blood cell and platelet counts. So tracking symptoms and blood counts is key. Absolutely. Early detection through repeated blood tests, especially lymphocyte counts, and carefully noting when symptoms appear is critical for diagnosis and treatment. Beyond those acute effects, what are the long-term studies of the hypoacusia shown? Decades of research, right? Yes, the Radiation Effects Research Foundation, RERF, has done incredible work tracking the health of survivors for over 70 years. They found clear, statistically significant increases in the risk of developing various solid cancers, lung, stomach, colon, breast, thyroid, and others. How much of an increase? It's dose dependent. The higher the radiation dose someone received, the higher their risk. Overall, RERF estimates that maybe around 11% of the solid cancer deaths among the survivors studied were due to the radiation, but that percentage is much higher for those who received substantial doses. There's also a very clear increased risk of leukemia, which actually appeared earlier than the solid cancers. And it's not just cancer, is it? No, definitely not. The studies also showed dose-related increases in other diseases that appear later in life, cardiovascular disease, like heart attacks and strokes, and issues with the circulatory, digestive, and respiratory systems. Things like chronic liver disease, uterine fibroids in women, cataracts in the eyes, and hypertension have also shown increased risks linked to radiation dose. What about effects on people who were exposed before birth, in the womb? That's a particularly tragic area. Studies found that exposure during a specific window of pregnancy, mainly between 8 and 15 weeks after conception, when the brain is rapidly developing, led to an increased risk of severe mental retardation and smaller head size in some children. There seems to be a threshold dose for this effect. Does the type of bomb matter there? It seems so. The Hiroshima bomb, Little Boy, had a higher proportion of neutron radiation compared to the Nagasaki bomb, Fat Man, which was more gamma rays. Neutrons can have different biological effects, and this difference might explain some observed variations in the in utero effects between the two cities. But what about birth defects generally, in children conceived after the parents were exposed? That's a really important point. Extensive studies, starting right back in 1948 and continuing for decades, have looked for increases in birth defects, stillbirths, infant mortality, or childhood cancers among the children of survivors, and they have not found any statistically significant increase. So the genetic fears weren't borne out by the science. Largely, no. While radiation can cause genetic mutations, the studies on the children of survivors haven't shown detectable inheritable effects across the population. There was one study suggesting a possible link between prenatal exposure in Nagasaki and schizophrenia later in life, but it's complex and needs more research. And of course, direct radiation exposure caused severe skin burns and localized injuries too. Beyond the physical health, the survivors faced other terrible long-term impacts, didn't they? Socially, economically. Oh, absolutely. The Hibakusha faced, and sadly sometimes still face, terrible prejudice and discrimination in Japan. People feared they were contagious or that they would pass on defects, even though, as we just discussed, the evidence for inherited effects wasn't there. This made it hard for them to find jobs, get married. It is. And many survivors suffered from long-lasting psychological trauma, PTSD, depression, anxiety, decades after the bombings. Economically, the destruction was total. Cities had to be rebuilt, people lost livelihoods, governments faced huge costs. Then you have secondary hazards, fires raging uncontrolled, damaged power lines, gas leaks, broken water mains, collapsed bridges, and the potential for an electromagnetic pulse, an EMP, to fry electronics, though that was less understood then, and finally the fallout. Radioactive dust spreading. Exactly. Carried by the wind, settling over unpredictable areas. Most dangerous near ground zero, of course, but it could travel for miles, contaminating land and water. The radioactivity decays over time, but it posed a lingering threat. It's just an overwhelming picture of suffering, immediate and long-lasting. Which really drives home the importance of this last part of our discussion. Yeah. The lessons. What must we take away from this for peace, for disarmament? The most fundamental lesson is the sheer catastrophic nature of these weapons. The scale of destruction, the indiscriminate killing, the decades of health problems, it's unlike anything else humans have created. We have to remember that. The international campaign to abolish nuclear weapons, ICAN, often points out that those 2,000 plus tests since 1945 have also spread harm and fear globally. And the importance of listening to the survivors.
absolutely critical. The hibakusha, the survivors of use and testing, they are the real experts. Their voices, their stories are the most powerful testimony against these weapons. They ground the abstract horror in human reality. We have to listen to them. Ethically, the debate continues, doesn't it, about the morality of using the bombs and possessing them now. Yes, many critics argue forcefully that nuclear weapons are fundamentally immoral, that their use constitutes a war crime, maybe even state terrorism, because they inherently cannot distinguish between combatants and civilians. And in the Indian context. Well, Mahatma Gandhi was profoundly opposed to the bomb. He saw it as a complete moral failing, totally incompatible with nonviolence, ahimsa, and basic human dignity. That pacifist tradition remains strong in India. Of course, India's official policy today involves maintaining a nuclear arsenal, citing national security needs in a complex region. But India also consistently advocates for global, universal nuclear disarmament as the only truly ethical, long-term solution. It's also crucial to remember the timing, right? The bombs were dropped right as World War II ended and the Cold War began. Exactly. That context is vital. The US and the Soviet Union almost immediately became locked in this intense rivalry, including a terrifying nuclear arms race that lasted for decades. The US even developed strategies like massive retaliation, threatening overwhelming nuclear attack in response to any aggression. And there were actual plans for nuclear war. Chillingly, yes. We know from declassified documents that in the late 1950s, US war plans included the systematic destruction of over 1,000 major urban centers in the Soviet Union, Eastern Europe, and China. It's horrifying to contemplate. The Cold War ended, thankfully, but the weapons didn't disappear. No. And the problem of proliferation, more countries getting nuclear weapons emerged. By 2020, 9 nations were known or believed to possess them. There are treaties trying to control this. Yes, the main one is the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, the NPT. Most countries are party to it. Japan signed it back in 1970, pledging not to acquire nuclear weapons, though it remains under the US nuclear umbrella for security. More recently, in 2017, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, or the Ban Treaty, was adopted by 122 nations. It aims for a total ban. But the nuclear-armed states haven't signed that one. No, none of the nuclear-armed states, nor countries like Japan that rely on nuclear deterrence, have signed the Ban Treaty, so there's still a major divide. So remembering, how do we ensure future generations don't forget Hiroshima and Nagasaki? It has to be an active, collective effort. Remembering isn't just about looking back, it's about honoring the victims, truly absorbing the lessons learned, and using that understanding to work for a more just, more peaceful world. Things like the annual ceremonies, the floating lanterns in Hiroshima, they're powerful symbols of remembrance, but also of hope and determination. And it comes down to individual responsibility, too. I think so. We all have a role, reflecting on how we contribute or don't contribute to peace in our own lives, in our communities, supporting efforts towards disarmament, promoting understanding, demanding accountability from leaders. It all adds up. It really does. So, wrapping up. The sheer destructive power, the horrifying long-term consequences for people and the planet, these are the stark warnings from the atom bomb. The history is complex, debated, yes, but the core lesson seems undeniable. Pursuing peace, pursuing complete nuclear disarmament isn't just some lofty ideal. It feels like an absolute imperative for our survival. Absolutely. Understanding this history, we hope, gives you, our listeners, vital context for the huge global challenges we're still facing today. And maybe a final thought to leave you with. Considering everything we've talked about, the science, the history, the devastating human cost, what do you think is the single most critical, most urgent step the world needs to take right now to prevent nuclear weapons from ever being used again? A profound question indeed, something for all of us to reflect on. Thank you so much for joining us for this deep dive. We hope it's given you valuable insights into a truly critical topic.